Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 3, that is human health, and today I will deliver its 5th lecture. And in today's lecture, we will discuss about the important components of balanced diet, which are carbohydrates, proteins, and lipids. So my dear students, let's recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the question carefully and then answer it. How do you take care of your personal hygiene? Very good. What type of diet you take? Very nice. So my dear students, taking exercise, drinking fluids, brush your teeth twice daily, consuming healthy food. So these are all the ways to keep ourselves healthy. So my dear students, the components of the balanced diet are carbohydrates, proteins, minerals, lipids, fats and vitamins. So let's move towards an ice-breaking activity. Show students the given pictures and ask them what they like to eat from these. ठीक है, आपको अभी मैं कुछ foods दिखाऊंगी, आपने बताना है कि आपको कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है. What type of components they gain from their favorite food. और आपको अपने फेवरेट फूड में से कौन सा कंपोनेंट मिलता है. हमने कुछ कंपोनेंट्स के नेम्स अभी पढ़े थे, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स. सो पास्ता, मिल्क, फिश, ब्रेड, बनानास. आपका फेवरेट फूड कौन सा है? I like to eat pasta. This is my favorite. And what type of components it has in it? It has carbohydrates in it. So my dear students, now let's move forward towards today's lesson. In today's lesson, as I told you, we will discuss about 3 important components of balanced diet: carbohydrates, proteins and lipids. And let's quickly again look at the student learning outcome, define balanced diet and explain its components. So now let's quickly look at the Islamic perspective. Eat from the good things which we have provided for you. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने बेशुमार ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमारे लिए दुनिया में भेजी हैं और हमें चाहिए कि हम इनमें से हलाल और अच्छी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सम प्री रीडिंग क्वेश्चंस. व्हाट आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? मिल्क, ग्रेन्स, wheat, rice, these all have carbohydrates in them. Now from where we can gain proteins? Meat is a great source of proteins. Do you think ever that the importance of fats in our body? आपको पता है कि fats की हमारी body में क्या importance है? It keeps us warm. So fat जो है ये हमारी body को warm रखता है और ये energy को store कर लेता है. So if there is ever आपको खाने की deficiency हो तो आपकी body जो है वो fat consume करती है जो store हुआ होता है body के अंदर. So my dear students, now let's move forward towards the reading. Quickly open the page where there is carbohydrates in your Science 4 book, chapter number 3. Very good. Now quickly read with me. Put your fingers where I will read. Carbohydrates. Carbohydrates are macronutrients. They are major, the most important and instant source of energy for human body. So हमारी body के लिए carbohydrates energy का काम करते हैं. So sources क्या क्या हैं इसके? Fruits, grains, vegetables, milk products and sources of carbohydrates. Now what are the functions of carbohydrates? Carbohydrates are the fuel of our body. They provide energy to the body. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह आपको अपने डेली के काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. एंड मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू ईट, जो आप मुख्तलिफ खानों से हासिल करते हैं, रोटी से, चावल से, दूध से, मक्खन से. सो विच एवर थिंग्स दैट हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन देम, आपकी बॉडी उनसे एनर्जी लेती है. So carbohydrates is the major source of energy of our body. So all these foods have carbohydrates in them. And some junk foods also have carbohydrates in them. So the function of carbohydrate is to keep yourself healthy and active and perform daily functions of the life. So now let's move towards the next important nutrient in our balanced diet, that is proteins. Read with me again. Proteins. Proteins are also macronutrients present in our bodies. They are made of amino acids
which can be called as the building blocks of body. So जो प्रोटीन्स हैं ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि ये वो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं. सो प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के ये अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके अंदर जो हैं उनसे बनते हैं, और ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. हाउ दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स? बिकॉज दे हेल्प टू मेक आवर मसल. ये हमारी मसल फॉर्मेशन में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. सो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन एग्स, मिल्क एंड मीट. फंक्शंस क्या है इसके? प्रोटीन्स मेक एंड रिपेयर टिश्यूज इन आवर बॉडी. A protein called hemoglobin carries oxygen to every part of our body. Proteins protect our body from diseases. They provide energy for growth in the form of enzymes, proteins, and digest food in our body. So my dear students, proteins जो है ये बहुत important है. ये आपकी टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं. अगर आपको कोई चोट लग जाए तो उसके रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. ये आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं. इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं ये आपको डिफरेंट डिजीजेस जो है उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं. आपकी बॉडी ग्रोथ में जो है वो इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो हैं आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो आपको फूड डाइजेस्ट करने में, हजम करने में भी मदद करते हैं. सो दिस वॉज अबाउट प्रोटीन. सो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड दे आर द मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. और प्रोटीन्स जो है वो इन तमाम चीज़ों में होते हैं, दूध में, अंडे में और गोश्त में. प्रोटीन्स जो हैं ये दे आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड ऑल दीज फूड्स हैव अमाइनो प्रोटीन्स इन देम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दे मेक अप आवर मसल एंड दे हेल्प अस इन ग्रोथ. These are the functions of proteins. Now let's move towards the next important nutrient, which is lipids, fats and oils. So lipids क्या होते हैं? ये fats and oils होते हैं. Like carbohydrates and proteins, fats are macronutrients. Fats are also the storage products of our body. They give us energy when our body has used up all its stored carbohydrates. So my dear students, जो fats हैं या lipids हैं ये भी macronutrients हैं like proteins and carbohydrates. इसके अलावा जो फैट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं, और जब अगर आपका स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट का रिजर्वॉयर ख़त्म हो जाए और हमारी बॉडी जो है उसको यूज़ कर ले तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? देन आवर बॉडी विल यूज़ द स्टोर्ड फैट फॉर एनर्जी कंजम्पशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फैट्स जो है ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द सोर्सेज ऑफ फैट्स आर, we get lipids from animal and plant sources. Animal sources include meat, milk and its products, while plant sources include all the oil extracting plants like the mustard family. Sunflower oil भी आप use करते हैं. So my dear students, जितने भी फैट्स हैं ये एनिमल्स से भी हमें मिलते हैं और प्लांट से भी मिलते हैं. एनिमल्स में हम डिफरेंट एनिमल्स के गोश्त को इस्तेमाल करके जो है वो फैट लेते हैं, वेयर एज फ्रॉम प्लांट्स वी टेक फैट फ्रॉम जितने भी प्लांट्स हैं जिनका ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो प्लांट्स जो है वो फैटी होते हैं. जैसे कि मस्टर्ड, उससे मस्टर्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है. सनफ्लावर से सनफ्लावर ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है. तो इसी तरीके से इनसे हम फैट लेते हैं, जितने भी ऑयल्स हैं उनमें फैट होता है. सो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शंस, lipids are secondary sources of energy. They provide safety cover to vital organs of the body. Fats keep our body warm. So my dear students, जो फैट है ये सेकेंडरी जो है वो एनर्जी सोर्स है, यानी कि प्रायोरिटी नहीं होती आपकी बॉडी की कि वो फैट कंज्यूम करे. आपकी बॉडी टॉप प्रायोरिटी पे कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करती है. सो फैट्स जो हैं जितने भी आप टेक इन करेंगे उनसे एनर्जी नहीं यूज़ होगी, बल्कि वो जाके आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे. तो हमें फैट बहुत ज़्यादा तादाद में कंज्यूम नहीं करना चाहिए. सो जो अगर ये फैट स्टोर हो जाएगा और अगर आपके कार्बोहाइड्रेट का रिजर्वॉयर ख़त्म हो जाएगा तब ये इनको यूज़ करेंगे. सो इसलिए ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके इंपॉर्टेंट जो बॉडी ऑर्गन्स है ये उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उनको कवरिंग प्रोवाइड करता है. इसके अलावा ये सर्दियों में व्हेन देयर इज सो मच कोल्ड ये आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं फैट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, दीज प्रोडक्ट्स हैव लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल इन देम. These are some sources of fats. Nuts, oils, avocados, they have fats in them. Meats also have, lean meat also have fat in them. And different junk foods, they also have fat in them. So these are the sources of fats.
So what they do, what is their function of fats? The function is to give protective layering to the important organs, and they also keep us from safe from the cold. So these are the functions. Now is the time for practice. You can download this worksheet for practice from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, how you will do this worksheet? First of all, write down your name and your roll number, and then why do we eat carbohydrates? Why do we eat? हम carbohydrates को क्यों खाते हैं? Because they are the fuel for our body. List sources of proteins. Protein के क्या sources हैं, उनके names लिखें. Next, match each nutrient with the food that contains it. अब यहाँ पे मुख्तलिफ food groups दिए गए हैं और यहाँ पे nutrients हैं. किस food में कौन से nutrients present हैं? Match with that. Okay. So this is, they have most of the carbohydrates in them. So this is how you will complete the rest of the worksheet. So pause the video and complete it. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards the evaluation. Why carbohydrates are important for us? Because they are the fuel for body, they provide us energy. From which foods we get lipids? Meat and different oils. We get fats from them. So your homework for today is, you will come on page number 50 and you will complete question number 9 from section number B, and you will do question number 2 from section number C. So my dear students, this is your homework, and what we have learned today we learned that carbohydrates are big source of energy. Sources of carbohydrates are foods, breads and grains. Proteins contain amino acids. Source of proteins are milk, fish and meat. Lipids are storage product for body. Source of lipids are nuts, fish and milk. So my dear students, I hope you have now you know about the 3 very important nutrients in our diet. So my dear students, in the next lecture, we will discuss about the next nutrients. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.